So here we are having the next chapter, which is chapter 5, coal and petroleum. In this chapter we are going to study about the natural resources, then the types of natural resources which are exhaustible and inexhaustible, and after that we will be studying about all the fossil fuels like coal and petroleum, about the formation of coal, the types of coal and uses of coal. The same things we will be studying in the petroleum also, how it is formed and what kind of petroleums we are having and how we can conserve these fossil fuels, because nowadays we are facing a lot of problems that we are having a lot of scarcity of these fossil fuels. ये क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. So we have to conserve them so that the further generations can also utilize these fossil fuels. Otherwise the coming generations, they will be facing a lot of issues, lot of problems. They will not be having these fossil fuels and they cannot be able to use all these kind of fuels. So starting from the chapter, we are having the natural resources. What are the natural resources? See, our nature has given us various things such as the air we breathe, water we take, forest we are having lot of trees. ट्रीज से हम लोग कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, इतने सारे. अपार्ट फ्रॉम देम वी आर अगेन हैविंग सम मिनरल्स. मिनरल्स को भी हम कैसे यूज़ करते हैं मिनरल्स में से हम ओर्स में से कैसे मेटल्स को रिफाइन करके निकालते हैं. वी यूज ऑल दोज मेटल्स फॉर आवर पर्पसेस. अगेन वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स. उन सॉइल्स में हम लोग ट्रीज को उगाते हैं, डेड बॉडीज को बरी करते हैं. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. Nature has gifted us with these kind of things which we use for our need. So these all things which are provided by the nature, these are all the resources which we call as the natural resources. These are the gifts of nature. हमें जो gifts मिल रहे हैं, nature has provided these gifts in free. We are having a lot of things which we are gifted by the nature. So these resources which we obtain from the nature, these are the natural resources, and this include different things. Land and water, we are having certain sections. 4 kind of things we are having. Firstly, land and water. Second, plants and animals. Third, air and the sunlight we are having. And fourth, we are having the mineral sources such as coal and the petroleum. So these are basically the natural resources which we get from the nature. Now we are having 2 types of natural resources depending upon the availability of these resources in nature. Nature में वो कितनी availability है उनकी, कितने amount में वो present हैं, depending upon their availability. The natural resources can be classified into 2 categories. First one is inexhaustible and the second one is exhaustible. Exhaustible और inexhaustible उनके नाम से ही पता चलता है. From the name it is clear. Exhaustible कौन से हैं? जो exhaust हो सकते हैं, मतलब जो खत्म हो सकते हैं. And inexhaustible, they are named such because they are inexhaustible. They cannot be finished. They are in unlimited quantity. They are present in unlimited quantity in the nature. That is why they are named like this, that they are inexhaustible. They cannot be exhausted. So we are having basically 2 categories. First is inexhaustible natural resources and the second one is exhaustible natural resources. The inexhaustible ones are those which are present in the unlimited quantity in nature. नेचर में वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. कितनी भी एक्टिविटीज में हम उन्हें यूटिलाइज कर दे वो खत्म नहीं होंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज. एंड दीज आर द रिन्यूएबल सोर्सेज जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं और खत्म नहीं होते. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिन्यूएबल सोर्सेज आर सनलाइट, एयर एंड वाटर. यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट that sun is the ultimate source of energy. क्या उससे sunlight जो हमें मिल रही है वो कभी खत्म होगी? It will never be exhausted. हम लोग कितना ही utilize कर लें sun को किसी भी purpose के लिए, how lot of activities we do by the sunlight, but can we exhaust all the sunlight? क्या हम sunlight को कभी भी पूरा exhaust कर सकते हैं? No.
we cannot exhaust it because it is the ultimate source of energy. Sun is the ultimate source of energy, वो कभी खत्म नहीं होगा. And we are having the sunlight in the unlimited quantity. Again we are having air. In the atmosphere we are having air. हम लोग कितना inhale करते हैं, कितने सारी population कितनी है हमारे इंडिया की, कितनी ज़्यादा population है. Not only India, all over the world कितनी ज़्यादा population है. Every person inhales air and exhales the carbon dioxide, which is again mixed in the air only. तो कितने सारे लोग हैं जो inhale करते हैं एयर को, बट क्या वो एयर inhale करने के बाद हमारी बॉडी में ही रह जाती है? क्या वो एग्जॉस्ट हो सकती है? कैन वी टेक अप द एयर एंड यूटिलाइज ऑल ऑफ द एयर? ऐसा कोई मेथड है कि हम लोग एयर को इनहेल करें, अपनी बॉडी में ही रखें, और इतने सारे लोग जब एयर को इनहेल करेंगे तो अल्टीमेटली एयर खत्म हो जाएगी? वी आर हैविंग सच प्रोसेस? नो, वी आर नॉट हैविंग. सो दीज आर सम सोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड. दोबारा हम इन्हें यूज करते रहते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी. दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय एनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. फर्दर वी आर हैविंग वाटर. वाटर भी कितना ज्यादा है, लैंड का पोर्शन कितना कम है. ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर हैविंग more water than the land. Water is present in about 70 to 80%. We are having water, and rest all we are having land. So water is also present in the lot of quantity, in the unlimited quantity, and it cannot only it is also some kind of unlimited source. Although usable water जो होता है, drinking water थोड़ा कम है, pure water we are having in less quantity, and this is something which we have to preserve. हमें preserve करके रखना है इन चीज़ों को ताकि ये exhaust ना हो, but we are having water in a large amount. So this is coming under the section of this inexhaustible natural resource, which is renewable resource. Next we are having the exhaustible natural resources, which are those which we are having in the limited quantity in nature. In nature, these are present in the limited quantity and they are likely to get exhausted over a certain period of time. क्योंकि ये limited quantity में available है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास करता रहेगा, as the time is passing, they are likely to be exhausted. धीरे धीरे अगर हम लोग इसी तरीके से उन्हें यूज करते रहेंगे, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेशन है उनके ऊपर, तो अगर हम उन्हें यूटिलाइज करते रहेंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा ना, देन when they will be exhausted because they are present in limited quantity, so they can be exhausted by the human activities. When we are utilizing these things, when we are utilizing the limited things, they can be exhausted. So these are the exhaustible natural resources, and these are also known as non-renewable resources because we cannot actually renew these resources और उन्हें हम unlimited quantity में नहीं कर सकते. So these are the non-renewable resources. And examples of these kind of resources, we are having the coal, petroleum and the natural gas. The fossil fuels are what? The fuels which were formed by the decomposition of the remains of prehistoric plants and animals buried under the earth millions of years ago. They are the fossil fuels. Fossil fuels क्या हैं? ये वो fuels हैं जो किससे मिलके बने हैं? जो प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो डेड बॉडीज हैं उनकी, या फिर जो प्लांट्स एनिमल्स जो बरी कर दिए गए हैं अंडर द अर्थ के नीचे, जो बहुत सालों पहले बरी हो चुके हैं. दीज वर बरीड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. कई मिलियन साल से पहले वो बरी किए गए थे, एंड दे हैव डीकम्पोज्ड. by the decomposition of the remains of all those plants and animals, we have formed the fuels which are called fossil fuels. Why they are named as fossil fuels? क्योंकि वो किससे बन रहे हैं? Fossils से बन रहे हैं. Fossils are what? The dead plants and animals or the dead bodies of animals or humans, they are called the fossils. Over millions of years, they are being decomposed to form the fuels. These are the fossil fuels. And examples of these fossil fuels are again the coal, petroleum and the natural gas. We will be studying in this chapter, we will be studying coal,
petroleum and natural gas one by one at a time. We will be discussing coal, then petroleum, and then we will go to the natural gas. So firstly we are having the coal. Coal क्या है? It is one of the most important minerals and the earliest used fossil fuel. सबसे ज़्यादा यूज करने वाला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो सबसे अर्ली एज में यूज किया गया था. सबसे पहले कोल ही हम लोगों ने ढूंढा था और दिस इज द अर्लीस्ट यूज फ्यूल. सबसे पहले जो फ्यूल यूज करना स्टार्ट हुआ था वो था कोल. इट अकर्स एट द वेरिंग डेप्थ अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ द एयर अर्थ. क्या बोला है हमने? दीज फॉसिल फ्यूल्स आर बरीड अंडर द अर्थ. अर्थ के नीचे ही बरी हो रखे हैं ना. ये अब कहाँ पे बरी हो रखे हैं? दिस डिपेंड्स. कोल की जो फॉर्म्स हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल्स. दे आर buried under the earth at different levels varying upon the depths के ऊपर vary कर रहे हैं वो. depending upon what kind of depth the coal is present, it is named differently. every type of coal is present below the earth के नीचे ही है हर टाइप का कोल. but depending upon the depth कि वो कौन से लेवल पे प्रेजेंट है, we are having different types of coal. So coal beds generally contain large amount of methane. तो जो coal beds हैं, coal beds किसको बोल रहे हैं? जहाँ पे coal present है, the depth at which that coal is present, that is the coal bed. उसमें क्या है? Large amount of methane is present and methane is actually poisonous. Methane क्या होती है? CH4, carbon with 4 hydrogens attached. This is methane. Coal is a complex mixture of carbon, hydrogen, sulfur and phosphorus compounds. कार्बन और हाइड्रोजन कितने फॉर्म प्रेजेंट है यहाँ पे? कार्बन क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? कुछ मिनरल्स और कुछ एलिमेंट्स. कार्बन है कोल में. क्या क्या है? वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, sulfur and the phosphorus compounds. These together form a mixture which is the coal. It is found in the coal mines deep under the surface of the earth. इंडिया में कहाँ पाया जाता है? इन इंडिया कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड मेनली इन द झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड द वेस्ट बंगाल. दीज आर द मेन स्टेट्स वेयर वी आर हैविंग large amount of coal present. So next comes the formation of coal. How actually the coal is formed? It is formed from the remains of plants that keep on burying under the soil. जैसे swampy forest होते हैं, उसके जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन होती है, वो फेल डाउन करते हैं, उसके ऊपर लेयर आ जाती है किसकी? सॉइल की. द लेयर ऑफ सॉइल इज कवर्ड. ऑल दीज वेजिटेशन एंड प्लांट्स दे आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल. लेयर अपॉन लेयर दीज प्लांट्स डाई. वो क्या करते रहते हैं? डाई करते रहते हैं एंड दे आर कंप्रेस्ड एंड कवर्ड विद द सॉइल. जैसे जैसे वो सॉइल से कवर होते रहते हैं और कंप्रेशन उसके ऊपर होता रहता है, एज द लेयर्स आर सक्सेसिवली कवर्ड, उनका एक्सेस जो नीचे बरी हो चुके हैं वेजिटेशन और प्लांट्स, द एक्सेस टू द एयर इज लिमिटेड. वो उनका एयर के साथ में एक्सेस क्या हो जाता है? लिमिटेड हो जाता है. एंड दिस स्टॉप्स द फुल डिकम्पोजिशन प्रोसेस which creates the first form of coal which is peat. Peat is the first form of coal जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है. जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ता रहेगा, कार्बन कंटेंट बढ़ता रहेगा और मॉइस्चर का कंटेंट कम होता रहेगा. The coal is formed due to the compression of peat at high temperature and pressure. सबसे पहले peat जो है that is actually the crude form of coal. वो coal अभी properly बना नहीं है, that is actually the crude form of coal. उसके अंदर कार्बन का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ 10 to 11% होता है. It is first form of coal which is peat and it is not having much carbon content. Now the coal will be formed by this peat by compressing this peat at high temperature and pressure. So as the coal is formed from the remains of vegetation, it is also called fossil fuels. क्योंकि fossils से बनता है ये fuel, तो इसे बोलते हैं हम fossil fuels. Hence this gradual process of conversion of dead vegetation into the coal can be called as carbonization because coal is having the carbon content inside it. Okay, here we are having one figure shown which is showing the formation of coal. Here we are having this figure. इसमें क्या है? पहले वाले figure, let me explain this figure.
इन द फर्स्ट वन वी आर हैविंग दीज 4 लेयर्स. यहाँ पे 4 लेयर बनाई हुई है. सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्या है? वी आर हैविंग ह्यूज फॉरेस्ट बने हुए हैं. यहाँ पे लंबे लंबे ट्रीज हैं, वाटर है और नीचे वेजिटेशन भी है. वी आर हैविंग ग्रीनरी ऑल ओवर दिस फर्स्ट लेयर. Here it is written huge forest that grew around 300 million years ago. पुराने 300 मिलियन साल पहले से उगे हुए फॉरेस्ट है. We are talking here about the 300 million years ago. उससे पहले के भी जो फॉरेस्ट है तब से बने हुए हैं. We are growing more and more trees and plants. Vegetation is increasing continuously. So they are covering most of the earth. जो ये फॉरेस्ट हैं ये सबसे ज्यादा पोर्शन अर्थ का कवर किया हुआ है. इसके अंदर से जो प्लांट्स और वेजिटेशन है they die and they got buried into the swampy soil. सॉइल के अंदर क्या हो गए? वो बरी होते गए. So what we are talking about, all these vegetation and the plants, they got buried under the soil, and the soil layer by layer they fell down and died. They are buried into the soil. और soil की भी उसके ऊपर लेयर आती गई जिससे क्या हो गया? कार्बन कंटेंट उसके अंदर स्टोर हो रहा है. एयर का जो एक्सेस है वो कम हो गया. डिकम्पोजिशन ऑफ द फुल डिकम्पोजिशन एक्चुअली स्टॉप्ड और उससे क्या हुआ? पीट बन गई, विच इज द क्रूड फॉर्म ऑफ कोल. हियर let me just annotate this one. The first form, सबसे पहला जो आपको शो किया गया है यहाँ पे, here it is written the vegetation dies and forms peat. This layer is showing you the formation of peat, which is the crude form of coal. इसके अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 10 to 11% आपका कार्बन कंटेंट होता है. After that we will be compressing this. Successively we will be compressing. जैसे जैसे हम compress करते जाएंगे, as the peat is compressed further, the carbon content will be increased. Carbon content will go on increasing and the moisture content it will be decreasing. Moisture content उसका कम होता जाएगा और carbon content बढ़ता जाएगा. जितना carbon content बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा the carbon content will be more and we will be getting different type of coal. First is the lignite. The peat is compressed between sediment layers to form this lignite. पहले क्या बना आपका? lignite. Lignite में है आपका 38% carbon. It is having 38% carbon. It is written here also. Sorry. Lignite is having 38% carbon. After that we will be compressing this more and more. जितना ज़्यादा compression होगा, further compression resulted in the formation of this bituminous coal, which is having 65% carbon. यहाँ पे carbon content और increase हो गया and it increased to the 65%. And even further compression resulted into the formation of this third type of coal, which is anthracite, which is having 96% of carbon content. So maximum amount of carbon content is present in the anthracite. This is the type of coal. These are actually the types of coal which are having increased amount of the carbon content. Here it is also written that the carbon content of coal, the carbon content of the coal rises as it is compressed further and the moisture content falls. The first type of coal to form is lignite. सबसे पहले peat बनती है. Peat के compression से lignite बनती है. Further compression leads to bituminous and lastly anthracite. So what is the कैसे follow होती है ये pattern? कैसे follow होता है? Firstly peat followed by lignite followed by bituminous coal and lastly the anthracite. So the carbon content is less. It is minimum in the peat, then lignite, then bituminous, and it is maximum in the anthracite. Anthracite में कितना है? 96% carbon content है. Now when this coal is heated in air, अब जब coal बन गया है, when it will be heated in air, coal के अंदर क्या है? We are having carbon content inside the coal. Coal में carbon content है, and when it will be heated, the carbon will be reacted with the oxygen present in the air. So carbon will be reacting with the oxygen to form carbon dioxide.
So whenever the coal is heated in air, it burns and mainly produces the carbon dioxide gas along with the heat energy. फिर रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है. Here it is written, here it is given how it reacts. It reacts by this reaction where carbon is combining with oxygen to form the carbon dioxide. Got it? Next we are having the types of coal. This we have already understood also, but let me just make it clear, make it more clear from here. Basically we are having these types of coal. Heat, then it is formed, lignite is formed, then bituminous, and at last anthracite is formed. Peat contains about 11% carbon. Lignite contains about 38% carbon. Bituminous contains about 65% carbon, and the anthracite contains about 96% carbon. And the uses are also written here. Peat के लिए क्या लिखा है? It is used to improve the soil and also used as the industrial fuel. Then lignite, it is considered a low grade coal. लो ग्रेड कॉइल है, जितना ज्यादा आपका कार्बन कंटेंट होगा उतना ही बेटर आपका कोल होगा. So it is lignite, it is having low content of carbon, it is considered as a low grade coal variety, it produces a lot of smoke on heating, it is also used for power generation. इसमें सबसे ज्यादा smoke produce होता है heating में, और ये किसके लिए यूज किया जाता है? For generating the power. Then bituminous is formed. Peat we have read, lignite we have read. Then bituminous is formed, which contains 65% of carbon, and it is also used in the power generation. किसमें यूज किया जाता है इसे? Thermal power plants में यूज किया जाता है, but इसका carbon content as compared to the lignite is about double. Then comes the last form, which is anthracite, which is best variety of coal. इसमें सबसे ज़्यादा carbon content है, so it is considered as the best variety of coal with 96% of carbon content. So after studying the formation of coal and studying the types of coal, we are having the uses of coal. Where the coal is used, we know that it is used for power generation. Lignite is used in the power generation, and also bituminous coal is being used in the thermal power plants. So basically coal is used for the power generation. So here we are having the uses of coal. Coal is widely used as a fuel in the factories and the thermal power stations to generate the electricity. See, we are aware of this fact that coal is a fossil fuel. So basically it is used as a fuel in the different areas. Factories में सबसे ज़्यादा fuel को use किया जाता है for carrying out different activities. Coal is used in the factories as a fuel. एंड इन द थर्मल पावर स्टेशन, जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे पावर जनरेट की जाती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? कोल यूज किया जाता है फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स फॉर जनरेशन ऑफ द पावर. सेकेंडली वी आर हैविंग that it can also be used to make several products such as coke, coal tar and coal gas. कोल से हम लोग उसके different forms भी बना सकते हैं, coal tar, coal gas and coal. We will be going to discuss these coke, coal tar and coal gas. इसके आगे आप यही पढ़ोगे. By the destructive distillation of coal, just below the uses of coal, we are having the destructive distillation of coal, by which we make these different products which are coke, coal tar and coal gas. They are actually forms of these coal. In कोल की ही डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं हम और इनको प्योर करते हैं और हम बनाते हैं कोल टार, कोल गैस एंड कोक. We will be studying this in detail. So basically it is used to make these kind of products also. Then coal is used for the manufacture of synthetic petrol and synthetic natural gas. आप सिंथेटिक पेट्रोल जो पेट्रोल बनाते हो और नेचुरल गैस बनाते हो which is prepared synthetically, that is using this coal for the manufacture of those synthetic petrol and synthetic natural gas. जो artificially हम लोग पेट्रोल बनाते हैं और नेचुरल गैस बनाते हैं, that for the manufacture of these things we use coal as the product.
Next is coal is also used as a source of many organic compounds such as benzene, toluene, phenol and naphthalene. These are basically the organic compounds. ये organic compounds हैं, benzene, toluene. These are actually बेंजीन से ही बनाई गई हैं. टॉलिन, फिनॉल, नैप्थलीन, ये बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन जो बेसिकली जो कंपाउंड है उसी को रिएक्ट करा के किसी ना किसी चीज़ से हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सो बेसिकली दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिकली. कोल इज द सोर्स ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी मच यूजफुल. आप यूज़ भी करते हो फिनॉल, नैप्थलीन तो आप घर पे भी यूज़ करते हो. यू यूज़ दीज नैप्थलीन बॉल्स इन द होम्स. The naphthalene balls in your homes for keeping your clothes free from all those fungi and what is stick to your clothes. उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, for protecting your clothes, you use the naphthalene balls. So coal is actually the source of many organic compounds also. And lastly, it is also used for the extraction of metals. When you extract the metals, there also coal is used. So these are some uses of the coal. Where the coal is used, coal is actually used in variety of places. जहाँ पे भी आपको power generation करनी होती है, wherever you are going to generate the power, there coal is used. So coal is basically used to generate power. सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो इसी के लिए यूज़ किया जाता है in the thermal power stations for generating the power.